This is only for swing, guys. Okay. Post the swings has been created. What are the steps that you will be looking for? Swing high 2930.451 minus 2833.877. What is the formulative number that we have got? The formulative number that we have got is 96.574. Right? Once you get this plan of actions, what are the steps that you guys will be following over here? We will be looking for the additional point of actions. How does it look? The additional points of actions is taken under consideration with 2880.437. Right? Direction is bullish. So plus, what is the formulative number that we are having? 96.75, sorry, 96.574 into what is the golden ratio number? 1.618. 1.618. What is the target that we are looking for at the current stage of actions? The targets are 36.69. If we mark and check, do we have the rejection from the same point of action? 36.69. Yes, we do have. So post this, what are the next steps that you will be looking over here? The next steps you will be looking over here is in the scenarios of the intermediate ratios, right? The intermediate ratios are looked in the precisions of what? 200%. How do you calculate that? 2880.437 plus 96.574 into 2. What are the targets that we are getting? 30,073.585. How do you look into the consideration over here? The considerational movement is exactly at the point of interest of the completion of 200% of our supply, right? Post this mark out. What are the next steps that you will be following? The next steps you will be following is, why was this drawing done over here at the first place? To understand the scenarios, each and every time, राइट, सेलिंग प्रेशर्स एंड बाइंग प्रेशर्स कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट? अगर मार्केट एक प्लान ऑफ एक्शन में बिल्ड हुई है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, दिस विल एक्ट एज दिस विल एक्ट एज the movements, right? Post every movement action plan, what does market tend to do? Market tend to create the wick generations, right? अगर मार्केट यहाँ पे विक जनरेट होते हुए नहीं दिख रही है, तो समझ लेना मार्केट इस पॉइंट ऑफ एक्शन में एक लिक्विडिटी हंट के लिए आएगी ही आएगी, right? In the scenario, it doesn't matter which side or the which direction the market is in. एक ही चीज यहाँ पे मार्केट फॉलो करेगा, क्या विक जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है? विक जनरेट हुआ है तो किस तरफ का विक जनरेट हुआ है एंड मूवमेंट किस तरफ बिल्ड हुई है, right? That are the major allocations what market will tend to do and continue with the movement plan of actions, right? In this scenario, each and every time wick किस तरफ जनरेट होते हुए दिखी है, right? The wicks are generated in perspectives of the movement at the buyer's pressures, not in the selling pressures, right? उससे पहले मार्केट में क्या प्रेशर थी, सुनील, right? The pressures what market were trying to give over here is all the selling pressures, right? Selling pressure, movement allocation point नीचे at the point of action, एक iceberg order reversal S2 S1 के साथ market tend to move in the bearish directions, right? In the bearish directions, do we have any kind of rejections at the current stage except this one candle? No, right? Post this point of actions, what are the next step did the market do? Market definitely went up. If you notice, from here only the selling pressure started. In the last 2 days, the market closed in the bearish movements, and in today's day as well, market ने क्या किया? एशियन एंड लंदन सेशन में
बेरिश मूवमेंट दिखा के एट द करेंट स्टेज बुलिश मूवमेंट में है. What are the next steps that we'll be following over here? आते हैं 4 hours. In 4 hours, what are the major things that you will be looking? Right? The major things that you will be looking over here is the directions. And how do you identify that? Again, let's do the same boring stuff. One, this is our major demand allocation, right? So over here, what do you notice? Definitely there was a move. What is the movement allocation of entirely 50 pips? In this 50 pips point of actions, what do you guys call this range as? Does it has some meaning? Yes. POI. POI के साथ inducement, inducement के साथ breakthrough, breakthrough के साथ supply and demand, right? Post allocation of the selling pressure, what did market tend to do? क्या ये real थी movement? Yes, movement तो real थी. But इस scenario में, what are the major steps do you notice? The major steps that you will notice over here is each and every point of action has a perpendicular candle. मतलब हर एक ग्रीन कैंडल के साथ रेड कैंडल है, रेड कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल है. मतलब यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? सर्कुलेटिंग सप्लाई जनरेट हो रही है. मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई जब जब जनरेट होता है, क्या होती है मार्केट में? फर्स्ट होती है हंट, उसके बाद होता है मूवमेंट, राइट? सो इन दिस सिनेरियो हर एक रिटेलर को यहाँ पे नीचे के लिए बिठा के with the plan of action, market tend to move with S2B1 scenario again, right? Definitely यहाँ पे क्या आपको circulating supply दिख रही है? नहीं. So we will look for an allocation of the supply. One, this supply will act as our current. This is our supply of the starting reversal point from the mathematical number to the continuity, right? क्या रिजेक्शन मिला? यस, डेफिनेटली रिजेक्शन मिला. इस रिजेक्शन के साथ क्या हमारा जो प्रीवियस सप्लाई थी, वो सप्लाई हमें यहाँ पे डिमांड में कन्वर्ट होते हुए दिखी? यस. पोस्ट दैट जितना हमारा करंट डिमांड कैंडल थी, क्या उतना नेक्स्ट सप्लाई कंप्लीशन पे डिमांड दिखने को मिली? यस. What will be the next step of action that you will be following? Whatever the movement you are getting in the previous supply, that will act as your current, right? In this point of actions, what are the next steps that you will be looking over here? मार्केट ने तो ब्रेक किया, नो डाउट. ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली सस्टेन हुई? यस, डेफिनेटली सस्टेन हुई. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में क्या आप डबल करना चाहोगे? डेफिनेटली, अगर मन होता है तो करो, नहीं तो मत करो, राइट? With this plan of actions, what did market tend to showcase you guys over here? Market took the rejection from 150%. Always remember, जितने भी नए लोग हैं, डेफिनेटली आप लोगों को ये डाउट आता होगा, why 150%, राइट? जब भी एक सप्लाई कंप्लीट होती है या डिमांड कंप्लीट होती है, उसके बाद अगर मार्केट मूवमेंट में कंटिन्यूटी में जा रही है, तो समझ लेना उस सिनेरियो में मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है, रैली कंटिन्यू करेगी, राइट? उस कंटिन्यूटी के स्टेट में जितना आपका सप्लाई या डिमांड है, उतने का 150% will be your next movement in the demand zone, same will be in your supply zone. With this point of actions, market will continue the rally till the 150% of both the sides, right? So 150 in the supply, 150 in the 150 in the demand, 150 in the demand, right? So that was the same scenario what market tend to create over here. उस plan of action के बाद जितना हमारा सप्लाई यहाँ पे थी, रिट्रेसमेंट कितना लिया मार्केट में? जितना हमारा प्रीवियस रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन है इन द सिनेरियो वन, मार्क दैट लेवल. क्या ब्रेक किया? यस, ब्रेक किया. उसके बाद फिर से मल्टीप्लाइड, allocated 150% या 200% will be your next rejection point, right? In this scenario 200% थी,
पोस्ट दैट व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, जो कि हमारा पूरा इंड्यूसमेंट रेंज का जितना लेआउट है वो लेआउट विल एक्ट एज योर सेकंड सिनेरियो. Okay, post the second scenario is acted, what are the next steps that you will be looking for? जितना हमारा previous supply है उस supply को यहाँ पे allocate करेंगे. What do we notice? Did the market tend to take the rejection from the same perspectives? Yes? No? Yes. Right? So here, what will be your next plan of actions? Okay, market tend to move in the directions, right? But is point of action may we do have a small inducement range, right? Post the inducement, what will you directly take the supply and put it over here? नहीं. फर्स्ट हमेशा चेक करना कि इंड्यूसमेंट रेंज का मूवमेंट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? अगर वो जब ब्रेक होती है इंड्यूसमेंट मूवमेंट की रेंज, तब जाके आप नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अलोकेशन देखोगे, ना कि उससे पहले. Okay, in this scenario, what are the steps that market tend to follow? Market tend to follow only one simple rule. What is that simple rule? इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने सेलिंग प्रेशर क्रिएट की, सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट नीचे के लिए गिरा, राइट? हाउ डिड द सेलिंग प्रेशर स्टार्टेड टू जनरेट? द सेलिंग प्रेशर स्टार्टेड टू जनरेट फ्रॉम दिस इंड्यूसमेंट पॉइंट. If you notice, selling, 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 continue, right? So in this plan of actions, what are the next steps that you will be looking over here? You will be looking to allocate the movements in the mathematical formations. So let's do the math and check what are the primaritical movements that you will be getting over here, right? With this plan of actions, what are the next steps that we'll be looking for? Before getting into the mathematical numbers, हम यहाँ पे allocate करेंगे previous demand. Previous demand में अगर आपको supply दिख रहा है तो supply कितना देगा? जितना previous supply में हमें demand दिखने को मिली थी, जो कि इस सिनेरियो में ये इंड्यूसमेंट रेंज है, दैट इंड्यूसमेंट रेंज विल एक्ट एज योर करंट रिट्रेसमेंट पॉइंट, राइट? सो द इंड्यूसमेंट रेंज ये वाला इस पॉइंट ऑफ एक्शन में, दिस विल बी योर करंट मोमेंट ऑफ एक्शन. मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट कितना मूवमेंट देगा? जितना हमारा प्रीवियस डिमांड अलोकेशन है उतना ही मूवमेंट यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा. ओके, सो ये होने के बाद व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू विल बी फॉलोइंग? मार्केट कंटिन्यूटी में क्लोजर दिया, यस, बट बॉडी क्लोजर कहाँ पे है? बॉडी क्लोजर इन स्टिल इन 100%, राइट? 100% के हिसाब से you can look for the next position allocation. In the next position allocation, 150% was the rejection point, right? So these are the scenarios of 4 hour swing trading of gold. With this point of actions, what are the next steps that we'll be looking here? Let's do the math and check what are our targets. We do know gold ka target aake 2997 hai. So in this perspective, let's just check the calculation so that you guys also know how. Okay, so this will act as my swing high. This will act as my swing low. This will act as my retracement point. Okay, let's do the math. Starting with the scenarios of the swing high and swing low, 3057.61671 minus 3025.780. What is the formulative number that we have got? The formulative number is 31.891, right? 31891. What are the next step? Retracement क्या है? 3047.891. Direction is bearish. We will subtract. With subtraction, what is the formulative number? 31.891 into golden ratio 1.618.
What is the target that we are having at the current point of actions? The target we are looking under 2996.291. So let's mark it out where exactly it is. 2996.291. Is it exactly my 150% of the zone? Right? That will be your action plan for the bearish markets in the current state of actions. Right? And evening session mein jitne bhi log hai, let me give you a surprise. Right? You guys will be having a form which you can directly use the numbers through the formulatical way and utilize it in the markets. Okay? So just give me a moment. वर्षा सभी लोगों को शेयर कर देना फिर से. And let them also use it. This will be the formulative sheets that you guys can use it. Very simple. Just you have to update the numbers of swing high, swing low, and retracement point. All other numbers will directly get intact in the moments. Right? Post this, what are the next steps that you guys can look into the circumstances? Let's work with the same formulative way so that it will be easier for you guys to understand. Right? So here, let's start with 4 hours completion. What are the next steps that we'll be looking over here? We will be looking in circumstances of the 1 hour time frame, right? In the 1 hour time frame, what are the major stuffs that you will be working over here? The major things that you will be looking for, क्या ये movement direct confirmation के साथ allocate होगा या ये movement में plan of action generate होते हुए दिखेगी, right? So in this scenarios, what are the next steps that you will be looking at? Let's look into the formations of the daily movements, right? What are the pressures indicating over here? The pressure indication is of bullish, bullish, bullish. But यहाँ पे आके selling pressure शुरू हुई है, right? So the confirmation is yet to be coming because अभी currently market is in the POI range, circulating supply generate कर रहा है. क्यों करके दिखाता हूँ? Because every third candle has a red candle. So this will definitely hunt each and every retailers in the point of action, right? So once this starts hunting, the first thing the market will tend to do is it will create a plan of action, right? How does that work? In the scenario, let's start with the movements again in the 1 hour, right? In the 1 hour spectrums, what are the next movements? In today's scenario, let's start with this because previously we had known the movements, right? This is our demand range. Post the demand range, market ने क्या किया? एक retracement लिया था. Retracement कितना लिया market ने यहाँ पे? जितना हमारा previous demand create होते हुए दिखी है, उतना ही movement of action आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी. 1 to 150% rejection. राइट, एग्जैक्ट रिजेक्शन के साथ मार्केट कंटिन्यू. अगर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एक्शन में आप लोग देखोगे,
मार्केट एक ही सेटअप के साथ फॉलो किया है, इंड्यूसमेंट S2. Okay, so with this plan of actions, what are the next things that you will be looking over here? Next thing is allocating the demands, right? This was your previous demand. The previous demand will act in the circulum of the current. With the current, what did market tend to do? Market tend to show and reject from 150%, right? If you guys want to know how, see exactly where is the moment. This is the moment point of action. Is point of action says point of action. What do you see? एग्जैक्ट 150% से रिजेक्शन लेते हुए कंटिन्यूटी में मार्केट दिखाई है, right? Suppose that what is currently market doing? Market is just hunting you out. So let's look into the circumstances of this will be your swing low, this will be your swing high, this will be your retracement point. Okay, so let's do the math and check what are the numbers that you guys are getting. The numbers that you guys are getting are 3017.880 minus what is the swing low? 2999.520. What is the formulative number that you guys have got? The formulative number that you guys have got is 18.36. In 18.36, what is the next step that you guys will be looking? The next step, you will be minusing the formulative number with the retracement point. 3010.064. Direction is bullish, plus 18.36 into golden ratio 1.618. What is the number that you guys are getting over here? The numbers you guys are getting is 3039. Okay, let me showcase you the same thing in the movement of the sheets what you guys have got. Let me update the number over here in the bullish scenario. In the gold, the swing high is 3017.880, right? What is the swing low that we guys are getting? The swing low we are getting is 299.520, right? What is the retracement point that we guys are getting? 3010.064. What is the value that you guys are getting over here? Exactly as the value that you wanted into the charts. The same numbers will get replicated just by updating swing high, low and retracement points, right? So once you update that numbers, you get exact formulative way of getting into your high points and low points. Okay. So once you get this number point of actions, what are the next steps that you will be looking for? Next steps you will be looking here is in the allocations of the movement to the
With this plan of actions, what are the next steps that you guys will be looking over here? The next steps you guys will be looking over here is in the movement action plans of the 15 minutes. 15 minutes में कैसा plan of action में उड़ाएगा? सबको यहाँ पे बुला रहा है on the closure के साथ continuity, right? It all depends on how will the market create the wick. अगर विक जनरेशन नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट विल टेंड टू हंट डाउन द एंटायर लिक्विडिटी टू जनरेट द आइसबर्ग ऑर्डर. हमेशा याद रखना, अगर मार्केट ऊपर जाना है नीचे आएगा, नीचे आके हर एक सर्कुलेटिंग सप्लाई में जितने लोगों को बिठाया है उतने लोगों का एसएल निकालेगा, उसके साथ मूवमेंट क्रिएट करते हुए जाएगी. इन दिस सिनेरियो एशियन एंड लंदन सेशन में मार्केट ने क्या किया है? This is the plan of action 1. Plan of action 1 के साथ market had continued to the next point of action. Market went on completions of 200%. With the 200%, what did market tend to do? Sorry, 150%. What did market tend to do? Market tend to take the rejection in the perspectives. जितना हमारा previous demand था उतना movement generate करके continuity में long के लिए गई है, right? With this plan of actions, what are the next steps that you will be looking over here? The next steps you will be looking over here is in the allocations of the previous supply, राइट? सो यहाँ पे प्रीवियस सप्लाई कौन सा था हमारा? ये वाला पॉइंट ऑफ एक्शन. इतना ही मूवमेंट आपको यहाँ पे करेंटली दिखने को मिलेगी. उसके साथ मार्केट हैज टेकन द रिजेक्शन. अगर मार्केट अभी नीचे आना है तो फर्स्ट क्या करेगा? जो हमारा लास्ट डिमांड कैंडल है, लास्ट डिमांड कैंडल यहाँ पे दिखने को मिलेगी, उसके साथ मूवमेंट कंटिन्यूटी इन द गोल्ड. ओके, एनी डाउट्स गाइस इन गोल्ड? Hit the like button, guys. Very good evening, Rishabh. Very good evening, Sumit. Very good evening, Imran. Very good evening, Hans. Sound नहीं आ रहा है क्या? Hello, hello. You guys are not getting the voice? Gold target hit 100 pips. आज morning वाला order. Beautiful, Hans. Keep it up. Good job done. BTC target hit. Lovely. Thanks, brother. Rajesh, मैंने क्या किया? Good evening. Nope, no doubts. For what? Healthy landmark. Good evening. So in gold, should we still target 3036 as obtained in 1 hour time frame? Yes, we will look for that target if only in one condition, if the market will not hunt you down. Circulating supply complete होने दो उसके बाद ही, उससे पहले I'm not interested. Okay, clear? Let's come down to BTC. Oh, beautiful guys. BTC का target hit हो चुका है. MTSL point still remains the same, and this will remain in the system at 86,704. Okay, beautiful movement, beautiful allocations. Right, सुबह वाला ट्रेड अभी तक चल रही है. Numbers देख सकते हो. 87756.8284. Market tend to reject from the same zone of action. Right, ये हमारा 1 hour का action point था, ये हमारा 15 minutes का action point था. That is being taken under the consideration of the movements, right? अगर आप लोग notice करोगे, this is not one supply, this is a inside liquidity entirely
which market took. अब बताओ. This is how you execute the trades, right? I'm not saying you anything. Sir, I didn't got the sheet. Sheet is in the link. ऊपर pinned है देखो. Okay. This is how you look into the circumstances of the movement, right? ये allocation हमने किया था जब market 2686 250 में था. It's just simple liquidity of allocations that you guys have to understand, nothing else. And where did the market come till? The same point of action. गोल्ड में कोई डाउट्स है जल्दी बता दो, नहीं तो विल मूव टू बीटीसी. नो डाउट्स. ओके यू. अरुंधति मैम, एनी डाउट्स? नो. ओके. हिट द लाइक बटन गाइस, विल मूव टू बीटीसी. इमरान कोई डाउट है? हंस कोई डाउट है? नहीं नहीं, अंबिका बने. दैट्स टोटली फाइन. 2000 पॉइंट के नीचे जब क्लोज होगा तब निकलना, उससे पहले नहीं. मार्केट इज रनिंग विथ नाइस 2800 पॉइंट्स. नो डाउट्स. ओके. लेट्स स्टार्ट विद बीटीसी. पंकज स्ट्रीम पे हो क्या? डेली टाइम फ्रेम. ब्यूटीफुली डन. बीटीसी को रोक के दिखाओ कोई. दिस इज आवर पीओआई रेंज. जितना पीओआई रेंज है वो हमारा एक्ट ऑफ कंडक्ट होगा फ्रॉम द इंड्यूसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन. इन दिस सिनेरियो द इंड्यूसमेंट गॉट कंप्लीटेड ओवर हियर. उसी पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ मूवमेंट रिजेक्शन. मूवमेंट रिजेक्शन के साथ what are the next things that market tend to do? Market took a rejection because this was a mathematical concept number. Okay, so वहां से ही market reverse हुई है. What are the next steps that you will be looking under the consideration over here? Let's mark out each and every internal liquidity points. Okay, so this is our major internal liquidity point, जो कि हमारा 4 hours swing का target है. मार्केट ने इसी पॉइंट ऑफ एक्शन से रिजेक्शन क्यों लिया? जितना हमारा प्रीवियस डिमांड यहाँ पे अलोकेट हुई थी उतना ही यहाँ पे मूवमेंट ऑफ जनरेशन दिखने को मिला था पोस्ट S2B1 सिनेरियो. And exactly rejection was taken from the same point of actions, right? यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्लान क्या है? जितना हमारा सप्लाई जनरेट हुआ उस सप्लाई के साथ रिजेक्शन हमको कितना दिखने को मिला था? जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई जनरेट हुई थी उतना ही मूवमेंट यहाँ पे हमको डिमांड में दिखने को मिली. On continuity, what are the next steps that you will be looking? The next steps you will be looking is allocating the supplies into the current conditions. What do you see? Where exactly the market is tend to trade at? The same point of action of the previous, जो कि हमने red line mark की थी, right? So this is the major allocations of daily time frame. अगर daily time frame पे अगर आपको target allocation point चाहिए, this is the swing high, this is the retracement point, and this will act as your current swing low. Right? In this scenarios, what are the next steps that you will be looking over here?
The next steps you will be looking over here is allocating the movements in the directions of the markets through the mathematical numbers, right? For that, everyone come down to Google Sheet. I am just changing the numbers so that it will be easier for you guys to understand. BTC bullish scenario, swing high is 84635.44. What is the swing low? The swing low is 76598.60. What is the formulative number that we have got? The formulative number is 8036.84. What is the retracement point? 80053.05. What is the values that you guys have got over here? The values you guys have got is 93,056 as an intermediate ratio. So let's mark 93,056.65. Right? Once we got that number, what is next number that we are looking over here? The next scenario number that we are looking over here is the intermediate ratio, which is exactly acting as the perpendicular of 96126.73. Right? So I'm not taking this under the consideration because हमारा internal liquidity उसके साथ ही है. So no change in actions at the current state. Okay, when there is no change in the current state of fact, what are the next steps that we'll be looking over here? The next steps we will be looking is in 4 hours. What is 4 hours indicating over here? The 4 hours is indicating the movement in the bullish scenarios. In the bullish scenario, why did the market tend to come down at the first place? Why was this fall? Why was this fall? To understand the circumstances and why is this going up, even that we will have the discussions in today's session to understand it better. Okay, in this scenario, market tend to take the rejection from the perspectives of the one, right, which is taken under the consideration of this demand point of action as 1 point, multiplying the next with the continuity. Market exactly took the rejection from the same. So this will be acting as a reversal point of action, जो कि हमारा mathematical number था. उसके साथ the next steps that you will be looking in circumstances will be followed through the previous supply. In this scenario, this is my previous supply. This will act as my 1 point of action, right? Post acting this point of actions, what are the next steps that you will be looking over here? You will be looking for rejection perspectives. Market ने rejection कितना लिया? जितना हमारा previous allocation point था उतना ही rejection यहाँ पे आपको दिखने को मिली. Right, with that, if you are not convinced, take the scenario 2 only. Post the retracement जो red candle generate हुई है, that will act as your first point of action. Market उसी point of action के साथ continuity में दिखी थी. So what is the next step? 200% allocation point. Right? Where did the market tend to take the rejection from? From the 200% point of actions. Right? जैसे ही a plan of action generate हुआ, what are the next steps that you will be looking and following over here? आप लोग सिर्फ simple step of actions follow करना होता है. जितना आपका previous supply यहाँ पे दिखी है, उतना ही movement of action आपको दिखने को मिलेगी. This will act as your current. Okay, so this is the plan of actions that we'll be looking in the considerations of 89 to 73 in the next plan of movement, right? For that, what is the swing high and swing low? The swing high will act as this, swing low will act as this point of action, and low remains the same, right? Let's do the math again. So the math over here is 82261.44
What is the retracement? What is the swing low value? 76619.54. What is the formulative number that we have got? 5641.9. What is the retracement value that we are looking at? 78894.24. What is the numbers that we are getting? The numbers we are getting is 88022.83, right? 88022, जो कि ये नंबर है जो हमारा सप्लाई का जो ऑलरेडी मार्क्ड है, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दैट. आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड द इंटरमीडिएट रेशियो विच विल एक्ट एज 90,178.04. Okay, so this will be my next plan of actions of the intermediate ratio post completion of my current target, which is at 88,022. Post completion of this, what are the next steps जो हमें follow करना चाहिए? Come down to 1 hour. What is 1 hour indicating? Why was the movement generated at first place and why did the market come down at the scenarios? Right? What do we entirely notice over here? What is this zone called as? Accumulation zone or point of interest or what? Correct, POI zone. So when there is a POI zone, हमेशा market क्या करता है? यहाँ पे liquidity grab करती है and it doesn't move in the zone. मतलब अगर consolidation zone होता है, market नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे. Right? Correct, Anirudh. It's a POI. Right, post this, what do we notice over here? We had a support to resistance, resistance to support. Post that, what did market do? Market tend to play around in between the zones on the hunt, right? In this scenario, what will market always tend to do? Grab the liquidity, right? यहाँ पे retailers perspective के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे इस point of action से selling होगा. क्यों selling होगा? Because that is their resistance point, राइट? रिटेलर्स के हिसाब से वो डिमांड जोन है, राइट? जब डिमांड जोन है, what are the next steps that you will be looking over here? The next steps that you will be looking is you will see a selling pressure over here in this candle. Let me remove this so that you guys can understand. What do we see? Do we have a selling pressure? Definitely we had a selling pressure. But in this perspective, will that work in the current scenarios? No, it won't work in the current scenarios because it will tend to hunt each and every person out, whoever is sitting towards the short, right? Post this moment of allocations, what did market tend to do? Market tend to follow three plan of actions at the current stage. Start with 23rd so that it will be easier for you guys to understand how did the market tend to move, right? Plan of action number 1, जितना हमारा फर्स्ट सप्लाई पॉइंट ऑफ एक्शन था उतना ही मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखने को मिली थी, राइट? पोस्ट दैट मार्केट टेंड टू ब्रेक एंड कंटिन्यू इन ए गो. What will we do over here? We will multiply the scenario by 2. What is the rejection point that you're noticing? Market took the small rejection from 200%. Market took the rejection from 200%. With this rejection perspective, what did we get over here? As per the movement plan of action, the previous retracement point will act as the current. Did we get the current action plan? Did we multiply it? Where exactly the market tend to take the rejection from? From the same plan of actions. In this scenario, the continuity will be from this point of action to this, which will be one supply acting post the retracement point. Right? Post the retracement point, what do we notice over here? Exact completion. Post completion, market tend to take the rejection on the continuity. राइट? रिजेक्शन कहाँ से लिया था मार्केट ने? 150% से. पोस्ट 150% से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी पे क्लोजर दिया है.
right? What are the next steps that you will be looking over here? The next steps you will be looking over here is in the circumstances of the movement in the directions of the scenarios wherever the pressure has been built, right? So how does the pressure gets built in the current scenario? The pressure gets built through two circumstances. This is your first retracement point. Let's take under the consideration of this. Post this point of action, we'll multiply it into 2. Where do you see the rejection? Exactly at the 200%. Post that, what are the next steps that you will be following? This will be your step 1, which will be taken under the consideration over here. With this plan of action, again the continuity. With this plan of action, again the continuity and the closure. What is currently market trying to do? Market is trying to hunt down each and every prospective whoever is taking long. कहाँ पे? मतलब यहाँ पे जितने भी लोग पुल बैक पे बैठे उनको उड़ाएगा फर्स्ट, उसके साथ यहाँ पे जो बैठे उनको उड़ाएगा, right? Then the running candle, guys, everyone will be taken under the consideration at this point of moment, right? Post this, what are the next steps that you will be looking over here? Let's do the math and check why exactly the movements is being taken under the considerations at this current stage of actions. So this will be my swing low of 23rd. Then the swing high will be taken under this point, the retracement point. Okay, let's do the math. 85450.40. Swing low is at 83,628.32. What is the formulative number? The formulative number is 1822.08 into what is the retracement point? 84789.53. What is the magic number that we are currently having? The magic number that we are having is 87737. Let's look into the perspective. Where did the market tend to take the rejection of the golden ratios at the current stage? 877,377.65. 87737. Do we have the rejection from the same perspectives at the current state? Yes, we do. What are the next steps that we'll be looking over here? The next steps will come down to 15 minutes to allocate the movements in the directions, right? With this movement plan of actions, what do market tend to create over here? Market tend to create a movement with what pattern, guys? क्या pattern follow किया यहाँ पे? Market has followed a perpendicular movements in the price actions of S1, S2 setup. Right? So here, what is the first plan of actions that you will be looking? 1, this will act as 2. जैसे ही second actions has been taken under the considerations, what are the next? Where will be your swing high? This will act as your swing high. This will act as your swing low. This will act as your retracement point. Right? Post the completions, what are the steps that will be following? We will subtract the movement in the plan of actions with 87906.40 as the swing high, swing low as 87525.95. What is the formulative number? 380.45. What is the retracement point we are having over here? 87798.56. Direction bearish, minus 380.45 into 1.618. What is the formulative number that we have got? The formulative number that we have got and the value which we will be looking for is 87182.99. In this scenario, what do we see? A exact zone of action जहाँ पे retailers is tend to looking to execute the trade again, right? इसके साथ
Where is the intermediate ratio that we'll be looking for? The intermediate ratio that we'll be looking for is 87,037.66. Okay, these are the two major levels where the liquidity hunt could happen and continue in the moments, right? So these are the possible ways of looking into the markets and being in the directions without any hesitations of the moment. Clear? कोई डाउट है बीटीसी में? Hit the like button, guys. नमस्ते सर, थोड़ा लेट हो गया. नो वरीज एट ऑल. टारगेट हिट हो गया पंकज. TP2 हिट हो चुकी है, राइट? MTSL पॉइंट को ऊपर कर लो. ओके, VP Kannada songs, bro from Karnataka. Welcome to the stream, VP. Hit the like button, guys. All the new members, welcome to the stream. जो भी doubt है पूछ सकते हो. If you're learning from the stream, if you're gaining the knowledge, if you're enjoying the trades, do it a like, share, and subscribe. Healthy landmark. How can I learn this from you from beginning? Complete the concept one playlist of MC. Post MC concept is completed. Then you can look for a supply and demand. Third, you can look in perspective of the liquidity DO, liquidity and volume DO. Right? These are the three playlists. Go through it. You will be able to understand what we do here. Okay. सर आप एक बार वीकली पर भी BTC का एनालिसिस कर सकते हो. डेफिनेटली करेंगे 2 मिनट के बाद. ठीक है. किसी को भी कोई डाउट्स है, प्लीज डू आस्क. एंड जितने भी लोगों को फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, link is been pinned in the chat box. You guys can open it and just put the swing high, swing low, and retracement point numbers. You guys will be able to identify the formulative numbers and the targets in the perspectives of the markets. हेलो बॉस, नमस्कार. कैसे हो मनन? लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. बढ़िया सर, आप बताओ. ट्रेड्स देख के क्या लगता है? ऑलवेज बी हैप्पी. ब्रदर, सप्लाई एंड डिमांड मैच नहीं हो रहा. राजेश, 2 दिन में अगर मेरा सप्लाई और आपका सप्लाई मैच हो रहा है तो समझ लेना
कि you have done the best job in the world. It's impossible. Rework on it. Okay. लोअर टाइम फ्रेम में मत जाना ही मत ना, 15 मिनट में हमारा एग्जीक्यूशन है. डोंट गो टू 5 मिनट्स और 1 मिनट. यू विल ऑलवेज गेट ट्रैप्ड. सर वो तो रोज का है आपका, उसमें क्या नया है? आप कैसे हो पूछा ना. मैं दुखी तभी होऊंगा जब कुछ वैसा सिनेरियो आएगा, उससे पहले नहीं. ऑलवेज फैंटास्टिक एंड अमेजिंग. यो मिस अंजलि, आप लेट हो गए आज. 15 मिनट्स. राजेश ब्रदर, फिर सप्लाई एंड डिमांड किस टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट करे? 15 मिनट्स में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, 5 मिनट या 1 मिनट में नहीं. सर अभी क्या सीन है गोल्ड का? लिक्विडिटी हंट कर रहा है, लिक्विडिटी होने के बाद नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन. ओके. अगर तेरे को देखना है ना ट्रेड. ओके. गोल्ड टारगेटेड 100 पिप्स मॉर्निंग वाला ऑर्डर. हाँ अंश जी, ब्यूटीफुल, ग्रेट. वो तो क्लोज हो गया ना आपका, या अभी तक चल रहा है? Great. Wait for the next plan of action and execution. Hit the like button, guys. राजेश, हमने किस टाइम फ्रेम पे किया? डेली टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट तक होता है. डेली होना चाहिए, 2 सेशन में होना चाहिए. एक दिन का स्टार्टिंग एशियन सेशन में, एक न्यूयॉर्क स्टार्टिंग. उसी प्लान ऑफ एक्शंस के थ्रू कंटिन्यूटी में आएगी. मनन, होप समझ में आ गया हो क्या बोला मैंने. पास हो गया तेरा अकाउंट? ऑल द न्यू मेंबर्स, कोई भी डाउट है प्लीज डू आस्क. And if you guys are liking it and learning from the stream and learning from the content, enjoying the trades, do hit a like, share, and subscribe. सर नंबर लगा दो स्क्रीन पे. यार उसे मेरे को एक्सेल खोलना पड़ेगा. रुको.
कहा सर मेरा तो सीन ही अलग चलता है. Sir, from where did you learn this amazing concepts? I create concepts, Mr. Healthy Landmark. And we trade through maths. So, yes. This is for BTC, guys. And gold का आके नहीं यूं ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों बैठ रहा है मेरा? उड़ाने का इरादा है क्या? उड़ाना का इरादा है तो बैठ, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है. What you're saying? I'm saying don't sit in my opposite direction. ये भाई क्या हो गया? शॉर्ट का ट्रेड का वैल्यू अलग था ना. ये गोल्ड में निफ्टी कौन कर रहा है यार? भाई इंडियन सेशंस का इंडियन सेशंस में करो यार, प्लीज. We have clearly mentioned Indian markets, gold markets, and BTC. Please work in that scenarios. ये टारगेट आया कैसे अभी? एक सेकेंड गाइस. Yo, we got the levels. Thank you, Varsha. What time frame do you trade in? Good evening, Forex trading Jin. Mr. Jin, what time frame do you trade in?
सर आप कोडिंग सीखना भी चालू कर दो, पास हो जाओगा, हो जाओगे। भाई मैं कोड करता हूँ, आई डू कोड। ये स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखा है। क्या बात कर रहे हो? कहा गया? This entire script is written by me. What are you saying? नहीं नहीं, मैसेज मिसरीड नहीं किया हो, आई एम सेइंग। सिखाना बोला? ओके, क्या सीखना है बोलो, सिखा दूंगा। इमरान कौन से ट्रेड में हो, गोल्ड का या बीटीसी का? डेफिनेटली बैंगलोर आ जाओ, सिखा दूंगा। डीएसए सीखना है ऐसे? डेफिनेटली सिखाऊंगा, बैंगलोर आ। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड algorithm, व्हाट इज द फुल फॉर्म पूछ रहे थे ना? नो ट्रेड टुडे। व्हाई डिडंट यू एग्जीक्यूट दिस वन? मनन को जब बोल रहा था, यू कुड हैव आल्सो टेकन दैट ट्रेड ना। नो वरीज एट ऑल। और कुछ? फोरेक्स ट्रेडर कौन से टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड करते हो बताओ, आई विल लेट यू नो विच टाइम फ्रेम्स यू शुड लुक फॉर द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। पंकज का एक क्वेश्चन था ना, क्या था वो? वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस करोगे?
नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नो साउंड करके मत बोलना बाद में। ठीक है। पंकज, होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ एक्शंस जो मैंने ड्रॉ किया अभी. Why is market taking rejection from the same point of action? Okay.
Is the session is mute now? मतलब TP2 is at 87037.66. मैं बात ही नहीं कर रहा था ना, मैं शांत था, आप लोग कुछ मैसेज ही नहीं किए। इमरान ने वरुण से पूछा, वरुण ने रिप्लाई दिया, उसके बाद उसने मुझे म्यूट में है करके पूछा, सो आई सेड मतलब नहीं नहीं म्यूट में नहीं है। Everyone hit the like button, guys. All the new members, whatever doubts you guys are having, please do ask. With that, if you're learning from the stream and the content shared, do hit a like, share, and subscribe. Brother, वो लास्ट ग्रीन कैंडल का प्रेशर मेजरमेंट किससे होगा? किसका? गोल्ड का? उसका मेजरमेंट ये ब्रेक करके कंटिन्यूटी में आएगी तभी ही होगी, उससे पहले नहीं। ओके, अगर वो सिनेरियो में बिल्ड आउट आती है तो दिस विल बी द प्लान ऑफ एक्शंस ऑफ द कंटिन्यूटी। वन पॉइंट, only in the circumstances of the continuity, not without any continuity we won't take under this consideration. ठीक है? BTC लास्ट कैंडल क्यों कंसिडर करना है? जितना आपका प्रीवियस मोमेंट अलोकेशन है उतना है ना। दिस इज योर रिट्रेसमेंट पॉइंट। ओके, गाइस, आई एम गेटिंग वन इंपॉर्टेंट कॉल, 2 मिनट के लिए म्यूट में रहूंगा।
Can you explain scenarios whether to consider wick in supply and demand and where only body to body? Definitely. 2 minutes, huh? Samarth. I will surely explain you that.
Sorry guys, sorry. Got an important call. Sorry. भाई ये क्या हो गया? रेसिपी बुक, आर यू स्टिल इन द शॉर्ट ट्रेड? शांति हो गई है। शांति शांति। माय एंट्री इज लिटिल डाउन 3026। न्यूयॉर्क सेशन का रूल्स फॉलो कर लो। टीपी वन आई एम फोली इज 3018। गलत है वरुण। ओके, आई ऑल्सो पुट टीपी एट 3018। दोनों गलत हो। That's fine. I will follow the New York session rule of 45 vessel. Okay. Before trading, what do you do? I was studying EC node robot. Okay. शांति हो गई है। सर मेरा एंट्री 3026.17 पर है। 20 पिप्स गया था। अब MTSL CTC पर होना चाहिए था। कोई पॉइंट नहीं। Follow the rules and sustain in the markets. Okay. Beautiful guys. What a point of action. Can you explain scenarios where to consider wick in supply and demand and where only body to body? सर ये बताओ। हाँ, समर्थ का भी वही पॉइंट ऑफ एक्शन है ना, बताऊंगा। 2 मिनट दो यार। अभी स्ट्रीम 1 घंटा चलेगा, बता दूंगा, टेंशन मत लो। So should I follow SL rule or MTSL? SL rule. मैंने बताया था क्या? मैंने कब बोला? मेरा नंबर्स कुछ अलग ही कह रहा है। मेरा नंबर तो कुछ अलग ही सुना रहा है। हम्म। लाइन डाली थी मैंने? कब लाइन डाला था? लाइन यहाँ पे है 2996। एंड ये वाला लाइन आके 150% का लाइन है। ये थोड़ी लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन फुल फॉलो करो ना यहाँ तक। इमेजिनेशन में लाइंस ड्रॉ करता रहते हो क्या तुम अविरल? डोंट बी इन द इमेजिनेशन। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग गाइस। समर ट्रेड वन, ट्रेडर 1.0। आपका नाम क्या है?
हाँ, मैं तुम्हें ट्रेड देख सकते हो यहाँ पे बोला था, ये रेड कैंडल में, करेक्ट। सो तुम्हारा एग्जीक्यूशन वो है। अंकित, सो अंकित एंड समर्थ, फॉलो दिस ओनली वन रूल। ओके, अगर कंफ्यूज हो रहा है, एंड एवरी वन कैन फॉलो दिस रूल, इट्स नॉट अबाउट जस्ट समर्थ एंड अंकित, राइट। लेट मी शोकेस यू, वन टू, 2 more minutes guys, one more important call, sorry. ओके, सो हो गया कॉल, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू, राइट। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर मार्केट इज इन द मूवमेंट, राइट, कंटिन्यूटी में मूवमेंट जारी है, आपको रिजेक्शन पर्सपेक्टिव्स दिख रहा है, राइट, इन दिस पर्सपेक्टिव्स यू कैन बी इन द ट्रेड, बने रह सकते हो कंटिन्यूटी में, टिल द पॉइंट ऑफ एक्शन एक विक जनरेट ना हो, राइट। ये विक जनरेट होने के बाद जो ड्रॉप आती है, राइट, ये ड्रॉप ऑफ एक्शन विल बी कंसिडर्ड इन द मूवमेंट्स ओनली एट द टॉप पॉइंट ऑफ एक्शन, करेक्ट। जब ये टॉप पॉइंट ऑफ एक्शन जनरेट होती है, तब एक ही चीज आप लोगों को फॉलो करके चलना है, इन दिस पॉइंट ऑफ एक्शन यू विल कंसिडर ओनली द मूवमेंट ऑफ द बॉडी।
Okay, same scenario for the long as well. अगर मार्केट ऊपर से नीचे के लिए आ रही है, राइट, एक पॉइंट ऑफ एक्शन पे आपको विक जनरेट होते हुए दिखेगी. ओके, इन दिस पॉइंट ऑफ एक्शन जितना भी मूवमेंट इसके बाजू से आती है कंटिन्यूटी में, what will market try to do over here? The market will try to not accumulate the liquidity of buying pressures. Okay, in this scenario movement could continue in the direct form of actions, right? So in this point of action, this will not be under the consideration here, and this will not be consideration over here. ओके, सो अंकित, समर्थ, जितने भी लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ एक्शंस में यू वोंट बी टेकिंग द एक्शंस एज दिस विक कंसिडरेशन. यहाँ पे सिर्फ जितना बॉडी का मूवमेंट होता है उतना ही आप यहाँ पे सप्लाई या डिमांड अलोकेट कर सकते हो, राइट? कहाँ से आप विक जनरेशन ले सकते हो? इन द सिनेरियो मार्केट ने ब्रेक दिया, ब्रेक देने के बाद मार्केट एक रिजेक्शन लिया, एक रिजेक्शन के साथ मार्केट कंटिन्यूड द मूवमेंट. Okay, so once the break of structure happens and market continues, then you can take the consideration of the entire movement and allocate it. Once the break of structure happens, you can take the entire movement and allocate it in the directions of the market, right? So this will be the plan of action, and market will tend to continue the movement in this scenario. ओके, सेम टूवर्ड्स द डाउन. जैसे ही मार्केट इस प्लान ऑफ एक्शन में आती है, एक ब्रेक दिखाती है, राइट? ब्रेक दिखाने के बाद सस्टेनेबिलिटी, with the sustainability there is a continuity. When there is a continuity of break of structure, that's when you will look for a wick calculation, else no. ओके, मूवमेंट कितना डेवलप होगा वहां पे? जितना हमारा प्रीवियस मूवमेंट कितना डेवलप होगा जितना हमारा प्रीवियस मूवमेंट कितना डेवलप होगा जितना हमारा प्रीवियस मूवमेंट कितना डेवलप होगा जितना हमारा प्रीवियस मूवमेंट ऑफ एक्शन है विक के साथ, उतना मूवमेंट यहाँ पे हमें फिर से देखने को मिलेगा. Okay, so that is only the time where you will consider the price actions. Without the price actions, no movements. विक इज ओनली कंसिडर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड सेकेंड चीज, बीटीसी में अगर ट्रेड करते हो, याद रख लेना, प्रीवियस अगर मार्केट नीचे गिर रही है, राइट, मार्केट नीचे गिर रही है, उसके साथ कंटिन्यूटी में आपको एक रिट्रेसमेंट आया है, समझ लो इन दिस सिनेरियो दिस इज द रिट्रेसमेंट, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में फिर से मार्केट कंटिन्यू हुई नीचे की तरफ, यहाँ पे चेंज हुआ प्लान ऑफ एक्शन, राइट? ब्रेक होते हुए मार्केट ऊपर गई, जब रिजेक्शन लेता है, राइट, when the market will tend to take the rejection, what is the one thing that you will be noticing? Only the body of the BTC's retracement supply will be considered over here, not wick to body. Okay, keep that in mind. With that following, market will tend to move in the directions and continue the action plans. समर्थ, अंकित, सब लोगों को क्लियर?
Yes. Beautiful explanation in short, but please check gold. It's at 3020. Hold Corona. From when did you start crying? Continuity. ओके, जो हमारा प्रीवियस डिमांड जितना है उतने का मूवमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुई है, राइट? दिस वाज द प्रीवियस मूवमेंट अलोकेशन पॉइंट, वो कंप्लीट हो चुकी है. अगर मार्केट अभी ब्रेक करके सस्टेन होती है, देन द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, या नहीं तो सबका एमटीएसएल लेके जाएगा. ठीक है. राजेश, गिव योरसेल्फ 22 days, you will understand. Okay, don't feel bad, give yourself 22 days. सिंपल सिनारियो बीटीसी में ही एक दिखा देता हूँ. 1 hour, 4 hours, वो कहा गया डेली. ओके, इन दिस सिनेरियो नीचे भी विक है, ऊपर भी विक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम बॉडी अलोकेशन लेंगे, राइट? ये बॉडी अलोकेशन विल एक्ट एज आवर करंट रिट्रेसमेंट पॉइंट. ओके, होप यू गॉट द एक्शन प्लान ओवर हियर. उसके साथ मार्केट विल टेंड टू कंटिन्यू. All the new members, if you guys are learning, if you guys are enjoying, if you guys are getting into the movements exactly how it works, do hit a like, share and subscribe. And पुराने लोग यार, मारो यार, एक हिट मारने में कितना तकलीफ आता है आप लोगों को. Hit the like button. Yes to B1 in BTC. जितने भी लोग यहाँ पे ये नोटिस किए, वेल एंड गुड. नहीं नोटिस किए, सॉरी. This is the third candle running, no? Yes. Rishabh, how is your learning going on? How are the things around with you? कोई डाउट है आपको? मिस्टर मित्तल.
All the new members start back testing. With the back testing, relay bar forward testing. Post closure of relay bar forward testing, you guys will be working on the current scenarios of लाइव टेस्टिंग होने के बाद छोटा सा वैल्यू के साथ ट्रेड एग्जीक्यूशंस टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑन टू द सेटअप. वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस ऑन टू द सेटअप, जो भी आपका रियल वैल्यू है ट्रेड करने का वो लाओ, उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो. रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके फियरलेस ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करो with only one thing that keeping in mind, that is emotional less trading. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Make sure carry the poker face while you execute the trades and sit till the mathematical numbers. Simple and easy step में समझा रहा हूँ. This is the only thing what you need. If you show impatience, if you show running candle executions, definitely market will take the money from you guys. यहाँ पे एक ही चीज चलेगी, वो है फियरलेस रहना एंड रिटेलर्स का एसएल्स को हंट करना. राइट, अंडरस्टैंड द फियरनेस ऑफ द मार्केट. फियर पैरामीटर क्रिएट होता है रिटेलर्स की वजह से. वो समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड the circumstantial ratio. The circumstantial ratio of actual theory is 1:10. ओके, अगर एक डर रहा है, एक डर के वजह से 10 और डरेंगे. राइट, बटरफ्लाई इफेक्ट. Right, with that scenario you guys have to keep in mind only one thing, that is following the statement of the market. स्टेटमेंट कैसे फॉलो करोगे? जहां जहां पे डर दिखता है वहां वहां पे पैनिक दिखती है. जहां जहां पे पैनिक दिखती है वहां वहां पे हंट होता है. जहां जहां पे हंट होती है वहां वहां पे मूवमेंट अलोकेशन के साथ ही मूवमेंट बना रहता है. ये चीज आपको याद रखनी होगी. राइट, फर्स्ट कैंडल क्लोजर, सेकेंड कैंडल, जितने भी रनिंग में यहाँ पे बैठे थे ना, जैसे ही थोड़े लोगों का एसएल हंट हुआ, ये कैंडल बिल्ड हुआ, सब लोग पैनिक में आउट. राइट, आप लोगों को ये जो सिनारियो दिख रही है ना, ये सिनारियो आप लोगों को समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर है. आई विल शोकेस यू. राइट, ये हमारा रेड कैंडल है, करेक्ट. लेट्स मार्क दिस एज रेड कैंडल. ओके, उसके साथ हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है. लेट्स मार्क दिस ग्रीन कैंडल. ओके, so in the pressure allocation, what does market has created? The wick range. Okay, what is the scenario called in your stuff? हमारे हमारे हिसाब से यहाँ पे लिक्विडिटी इंटीग्रेशन विथ आइसबर्ग allocation बोलते हैं, where the big players tend to place their order without knowing anyone. यहाँ पे ना आपको वॉल्यूम स्पाइक दिखा होगा,
ना यहाँ पे आपको अलोकेशन पॉइंट्स दिखे होंगी. लेट्स चेक द वॉल्यूम इन दिस सिनेरियो. ठीक है. So to understand the structures, you have to analyze the market perfect. ट्रेड्स तो आप लोग लेते रहोगे, बट ये एनालिसिस के बिना आप लोग कैसे एग्जीक्यूट करोगे? हम्म. Right, this is the candle. What do you notice? The lowest volume. This is the candle. What do you notice? The lowest volume. Right. So majorly the iceberg order was placed at this current scenario. Right. यहाँ पे ये जो विक का प्रेशर देख के ना, सब लोग यहाँ पे 0.5 से शॉर्ट के लिए बैठे. You have to understand that with that short only the pressure was built again. What do you notice? Where exactly everyone sat? 0.5. That was the reason again the selling pressure was there. Selling pressure के साथ retailers को एक ही चीज चाहिए, volume confirmation, the highest volume. लो, प्रेशर नीचे के लिए आया, रिट्रेस भी हुआ, वॉल्यूम भी ज्यादा दिखा. हर एक लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन दिया मार्केट ने कि मैं नीचे आ रहा हूं. बट अगर नोटिस करोगे, बड़े लोग तो यहाँ पे ही बैठ चुके हैं लॉन्ग के तरफ. ये कब समझोगे आप लोग? बताओ कब समझोगे? कोई बता देगा आपको यूट्यूब में यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा करके? सो लर्न बिफोर यू ट्रेड. ऑलवेज रिमेम्बर, जब सीखोगे ही नहीं, सिर्फ ट्रेड चाहिए बोलते रहोगे, तो ये जो पोजीशन है ना अर्न का, वो कभी आप कर ही नहीं पाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हो स्ट्रीम लैग पे. राइट. उसके साथ उसके पास होगा, वो अलोकेट कर रहा है, सच्चाई की झूठ है वो अलग सिनेरियो है. ऑल पुट टुगेदर वो बोलेगा मेरे अकाउंट में 30 लाख है. थोड़े लोग जेन्युइन भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन यूट्यूब नाउअडेज दिखाएंगे 30 लाख का अकाउंट. राइट. एग्जीक्यूशन चल रहा होगा 0.5 से, 0.4 से. इन लोगों को मानो ही मत. अगर अकाउंट में 30 लाख है, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से उसका लॉट साइज 1 के ऊपर होना चाहिए, अगर बहुत सेफ खेल रहा है तो भी. राइट. तो इन लोगों को बोल दो कि यहाँ पे लॉन्ग बैठना है, वो बोलेंगे, हंसेंगे. So always remember, before earning, remove the L, then you start to earn. Not directly in the earning stage. पैसा उड़ाने के लिए बैठे हो क्या यहाँ पे? नहीं ना. Learn. कड़वी है बट सच्ची है. कड़वी है बट सच्चाई है. इमरान ट्रेड में हो, हंस जी ट्रेड में हो.
I also booked loss on the short from there. Good evening, Patel. I applied this supply range in the current BTC move. Why you have to apply 1 hour का टारगेट आग के सामने दिख रहा है. ब्यूटीफुल गाइस. अरुंधति मैम ट्रेलिंग एमटीएसएल सब फॉलो करो यहाँ पे. यू एमटीएसएल लाइव पे एनालिसिस की. लाइव पे लेवल डाला यहाँ पे. लाइव पे एग्जीक्यूशन बताया. विद द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ एक्शन लाइव पे स्पॉट ऑन रखा था. उसके साथ कंटिन्यूटी. राइट. एग्जैक्टली मार्केट कहाँ से आके रिवर्स हुआ. सेम पॉइंट ऑफ एक्शन ना. मैथमेटिकल नंबर यहाँ पे ही है. 87182.99. Where did it tend to take the rejection from? BTC 15 minutes Indian time 3:30 to 4:15. 3:30 to 4:15. Hit the like button, guys. All the new members, if you guys learning, enjoying the content, do hit a like, share, and subscribe. Only if it contains about this 150% will be the target. 1,000 points running. One is saying this is common in trading. Varun, focus on yourself, man. वर्षा हटाओ यार इसे.
इस कमेंट्स को हटाओ। और एक टाइम भेजोगे तो मैं स्ट्रीम को स्ट्रीम में ही नहीं लूंगा, सच में बोल रहा हूँ। फोकस ऑन योर सेल्फ मैन, नॉट ऑन अदर्स। 'Beautiful guys, follow the MTSLs regenerated. Hello sir, let me give an example of my luck. मेरा ट्रेड 50 पिप्स पर था, मैंने सिस्टम पर एसएल लगा या था सीटीसी पर, जस्ट मेरा एसएल लेके गया है, उससे उसके पूरा एटलीस्ट 1 पॉइंट तो जाता। अविरल, एशियन सेशन, सॉरी लंदन न्यूयॉर्क सेशन का एसएल पॉइंट क्या है? 40 पिप्स ना। सो 40 पिप्स क्लोजर होने के बाद 20 पिप्स दिखना चाहिए, करेक्ट? So then only next plan of action will be taken under consideration of MTSL na. Beautiful guys, 1200 points running. Keep up the good work. Let's rule it. सबका MTSL 600 पॉइंट्स में होना चाहिए। सर 50 पिप्स रनिंग में था, सीटीसी पर ट्रेल कर दिया, क्यों किया? 40 पिप्स प्लस 20 पिप्स, 60 पिप्स आने के बाद, क्लोजर होने के बाद ट्रेलिंग होती है ना। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम डोंट फॉलो द सेम मिस्टेक। मैं समझ गया तू जो बोल रहा है। ओ, ये नहीं पता था। ओके, तो अभी पता चला। नेक्स्ट टाइम डोंट रिपीट इट। क्लियर? इमरान बीटीसी के लॉन्ग में हो, अंश बीटीसी के लॉन्ग में हो, अंबिका एमटीएसएल लगाओ। पंकज, your MTSL will move at 27,182.99 and your system trailing will be at 86,980। ठीक है? Hit the like button guys। मार्क कर दो सर।
This is the only thing I hate, but yeah, chalo. Yes, 2087 280 पे लिया था, third candle form rejection. Good analysis, beautiful execution, Imran. Okay, जो हमारा TP2 है ना, Pankaj, that will be your trailing point of action. MTSL will be over here. हंसते हंसते खेलते खेलते TP2 इवनिंग सेशन का हिट 1200 1350 running. Keep it up. So there is no emotions only. सुबह शाम चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, इमोशंस मत रखो मार्केट में. और आप मेरे को ही बोलते हो इमोशंस नहीं है. Good job, Imran. 1000 points running of yours also. To be precise, full 1200. Stream will be there for next 20 minutes. जो भी डाउट है पूछ लो. राजेश, हम एंट्रीज नहीं देते यहाँ पे. ब्यूटीफुल TP2 हिट गाइस. एक रिजेक्शन चाहिए, मजा आ जाएगा. अगर डायरेक्ट ब्रेक होता है, कंप्लीशन ऑफ 200%. मैथमेटिकल नंबर डालना है ना. 90,000 में है ना. सॉरी सॉरी, 90,089 पे है, मैं भूल गया. माय बैड. सॉरी गाइस, मैं भूल गया था. माय बैड.
Then I will wait for a swing. राजेश पैसे उड़ाने से पहले सीख लो यार प्लीज. दिस चैनल इज मेंट टू बी लर्न. सीख लो. उसके बाद जब चाहिए आप एग्जीक्यूट कर लो, प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज बिफोर गेटिंग इनटू द मार्केट्स understand why the market moves. Beautiful. गाइस सॉरी, एमटीएसएल चेंज होगा. जिनको भी डर लग रहा है कैन वर्क ऑन टू द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शंस. दिस इज द पॉइंट. Keep it up, Smita ma'am. Good job done. All the LTD members, wonderful. LTD stands for Live Trade Discussions and Learnings.
BTC were 115 and 330 candle were also iceberg orders. This one, yes. This one, no. Again, this one, yes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. Stream will be there for next 4 minutes. How to differentiate then in iceberg orders? Definitely, you will get a video on it. Okay. So लाइव पे मैं आपको समझाता रहूंगा बीच बीच में, so that you guys can identify the right iceberg orders. For iceberg orders, I'll give you one simple tip what you guys have to follow. There should be no volume. Okay, first thing. The first simple secret. Wherever the iceberg orders is generated, you will see no volume at that point. Let me showcase you the examples. Right? This two candles, no volume. This two candles, no volume. Right? Here we have a tangent volume. Next, the previous iceberg, no volumes. There should be no volumes at all. Always remember. Okay? So make sure everyone follow one thing. Don't lose the capital. Protect your capital. With protecting your capital, make sure that you be in the directions of the math. Trade fearlessly, execute the trades in the directions of the market. Trade emotionlessly. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. मिलते हैं कल सुबह 9 बजे. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय. नितेश signing off. Good night.